महाराज का पुस्तक वितरण के लिए खास करके विदेश में और 4-5 साल से यहाँ आकर शिविर चला रहे हैं। अभी अहमदाबाद में शिविर चलाया। अच्छा, यहाँ कुछ है यहाँ। अच्छा, हाँ। तो ये प्रभु जी 1956 में जन्म लिया मेरे से। When were you born in 56? Yes. No, which month? September. September. वो मेरे से 1.5 साल जितना छोटे हैं। You're a year and a half younger than me. I thought I was younger than you. और उन्होंने इसका लगते 73 में, मैं भी 73 में प्रवेश किया। You joined in 73? When? 1973. No, when in 73? August. In San Francisco. Yes. San Francisco महानगर में अगस्त महीना 73। काफी, ये कितना साल हो गया? 45? 40 वर्ष। 45 पूरा, 40 चालू। तो उनका ये प्रकाशित पुस्तक है प्रभु जी का, और इसमें उन्होंने प्रभुपाद जी महाराज का पुस्तक वितरण का महिमा का प्रचार किया, और उन्होंने बहुत लोगों को प्रेरित किया प्रभुपाद जी महाराज का पुस्तक का वितरण करने के लिए। अच्छा, हमारा संस्था प्रचार संस्था है, और प्रभुपाद जी महाराज पुस्तक वितरण को बहुत बल दिया। प्रभुपाद जी महाराज कहते थे कि मार्क्सवाद भी इतना दुनिया भर फैलाया पुस्तक वितरण के द्वारा, तो हमारा सिद्धांत वैष्णव सिद्धांत पुस्तक वितरण के द्वारा करना है। तो ये प्रभु जी मंदिर के अध्यक्ष में, जो सैन फ्रांसिस्को के निकट है और जो सुप्रसिद्ध है सिलिकॉन वैली के नाम से, अंग्रेजी भाषा, और जो अंग्रेजी नहीं समझते हैं, सिलिकॉन वैली का कहने का तात्पर्य है कंप्यूटर का धंधा का केंद्र। ठीक है, कंप्यूटर का धंधा व्यापार का मुख्य केंद्र, बहुत बड़ा, करोड़ों के कोटि क्या बोलते हैं, अरबों रुपया का धंधा व्यापार चलते हैं वहाँ। एक कंप्यूटर, और कंप्यूटर का जो चलाने वाला क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये प्रभु जी के प्रेरणा के द्वारा इसी साल में भी 500-600 श्रीमद् भागवत पूरे सेट, क्या बोलते हैं हिंदी में, सेट तो अंग्रेजी शब्द है, हिंदी शब्द नहीं, संकलित श्रीमद् भागवत 18 पुस्तक समुच्चय, और खास करके हिंदुस्तानियों को, क्योंकि काफी हिंदुस्तानी, मेरा बेटा भी वहां जाकर ये कंप्यूटर के धंधा व्यापार में लगे हुए हैं। और ये श्री राम प्रभु जी के साथ आया, इसका मैंगलोर के मंदिर के अध्यक्ष है, और उन्हीं का भैया, इनका बड़ा भैया ये प्रभु जी के दाया हाथ है पुस्तक वितरण हिंदुस्तानियों के बीच में, वहाँ सैन होजे कैलिफोर्निया। लेकिन मंदिर एक उसका उपनगर में है, माउंटेन व्यू, और शनि रवि में काफी हिंदुस्तानी वहाँ इकट्ठा होते हैं और सत्संग, और प्रभु जी के प्रेरणा से सब लगे हुए हैं। Is that okay? You don't have to say anything now. You don't mind? It was in Hindi, and someone here will translate your lecture into Hindi. Okay. तो प्रभु जी का स्वागत करने के लिए 3 बार हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, 3 times Hare Krishna. This is your money. Thank you. Hare Krishna.
Yes. There you go. Just it then. Perfect, perfect. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Brajadana Dandana Yashoda Nandana Brajadana Dandana Yashoda Nandana Brajadana Dandana Yashoda Nandana Vrajajana Jana Chamtira
Jayom Vishnupad Paramhamsa Parivajikacharya Stotra Shishimada Paicharanadam the Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Jayom Vishnupad Paramhamsa Parivajikacharya Stotra Shishimada Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj ki Jai. Ananta Koti Vaishnavrinda ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Prem Zakaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhaktivinoda ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gokopinath Shamakund Radhakund Giri Govardhan ki Jai. Shri Vrindavan Dham ki Jai. Shri Mayapurna Vidip Dham ki Jai. Shri Jagat Puri Dham ki Jai. Tulsi Devi Bhakti Devi ki Jai. Jamuna Devi Ganga Devi ki Jai. Sambheda Bhaktivinoda ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Gaur Premanande Haribo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiraye. We're reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 2. Yes, Chapter 2. Hiranyakashipu, king of the demons. Today's verse is number 12. 7 to 12. Yatra yatra dvija gavo vidavarnashrama kriya Tung tung janapadam jata Sandipayata Vrishata Sandipayata Rishchata Yatra yatra dvijagavo Veda Varnashrama Kriya Tam Tam Janapadam Jata Sandipayata Vrishchata Yatra yatra dvijagavo Yatra yatra dvijagavo Veda Varnashrama Kriya Veda Varnashrama Kriya Tam tam janapadam yata Tam Tam Janapadam Yata Sandipayata Vrishchata Sandipayata Vrishchata Yatra yatra dvijagavo Veda Varnashrama Kriya Tam Tam Janapadam Yata Sandipayata Vrishchata. Vaishnavis. Yatra yatra dvijagaro Kriya Tam Tam Janapadam Yata Sandipayata Vrishchata Yatra Yatra wherever. Should I do this also? Yeah, if you need it. Okay, Jaha Jaha. Dvija, the Brahmanas. Brahmanjan. Gavaha,
The protected cows. सुरक्षित गायें, Veda, the Vedic culture. वैदिक संस्कृति, Varna ashrama, of the Aryan civilization of 4 varnas and 4 ashramas. चार वर्णों तथा 4 आश्रमों वाली आर्य सभ्यता के Kriya, the activities. कार्यकलाप, Tum tum, that. उनको Janapadam, to the city or town. नगर या शहर में Yata, go. जाओ, Cha. Santi payata, set fire. अग्नि लगा दो, Rishchata, cut down all the trees. सारे वृक्षों को काट डालो. Translation, immediately go wherever there is good protection for the cows and brahmanas, and wherever the Vedas are studied in terms of the Varnashrama principles. Set fire to those places and cut from the roots the trees there, which are the source of life. जहाँ कहीं भी गांवों तथा ब्राह्मणों को सुरक्षा प्राप्त है तथा जहाँ जहाँ वर्णाश्रम नियमों के अनुसार वेदों का अध्ययन होता है वहाँ वहाँ तुरंत जाओ. तुम लोग उन स्थानों में अग्नि लगा दो और जीवन के स्रोत वृक्षों को जड़ से काटकर गिरा दो. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. The picture of a proper human civilization. Shall we go all the way through and then you'll do Why it? don't you go paragraph by paragraph? Okay. That'll be easier. Okay. It's 2 paragraphs. Right. The picture of a proper human civilization is indirectly described here. In a perfect human civilization, there must be a class of men fully trained as perfect brahmanas. Similarly, there must be kshatriyas to rule the country very nicely according to the injunctions of the Shastras, and there must be Vaishyas who can protect the cows. The word gavaha indicates that cows should be given protection. Because the Vedic civilization is lost, cows are not protected, but instead indiscriminately killed in slaughterhouses. Such are the acts of demons. Therefore, this is a demoniac civilization. The Varnashrama Dharma mentioned here is essential for human civilization. Unless there is a Brahmana to guide, a Kshatriya to rule perfectly, and a perfect Vaishya to produce food and protect the cows, how will people live peacefully? It is impossible. तात्पर्य यहाँ पर असली मानव सभ्यता के चित्र का अप्रत्यक्ष वर्णन हुआ है. पूर्ण मानव सभ्यता में भलीभांति प्रशिक्षित व्यक्तियों का वर्ग पूर्ण ब्राह्मण के रूप में होना चाहिए. इसी प्रकार शास्त्रों के आदेशानुसार सुचारू रूप से देश का शासन चलाने के लिए क्षत्रिय होना चाहिए और वैश्य होने चाहिए जो गायों की रक्षा कर सके. गावः शब्द सूचित करता है कि गायों को सुरक्षा प्रदान की जाए. चूंकि वैदिक सभ्यता समाप्त हो गए हैं, अतएव गाय सुरक्षित नहीं है, अपितु कसाई घरों में वे अंधाधुंध खाती जा रही है. ऐसी कार्य असुरों के हैं. अतएव यह आसुरी सभ्यता है. यहाँ पर वर्णित वर्णाश्रम कर्म मानव सभ्यता के लिए अनिवार्य है. जब तक मार्गदर्शन के लिए ब्राह्मण न हो, ठीक से शासन करने के लिए क्षत्रिय न हो तथा अन्न उत्पादन करने एवं गायों की रक्षा के लिए पूर्ण वैश्य न हो, तब तक लोग शांति पूर्वक कैसे रह सकते हैं? यही असंभव है. Another point is that trees also should be given protection.
During its lifetime, a tree should not be cut for industrial enterprises. In Kali Yuga, trees are indiscriminately and unnecessarily cut for industry, in particular for paper mills that manufacture a profuse quantity of paper for the publication of demoniac propaganda, nonsensical literature, huge quantities of newspapers, and many other paper products. This is a sign of a demoniac civilization. The cutting of trees is prohibited unless necessary for the service of Lord Vishnu. Jagnartat karmanon yatra loko yam karma bandhanaha. Work done as a sacrifice for Lord Vishnu must be performed. Otherwise, work binds one to this material world. But if the paper mills stop producing paper, one may argue, how can our ISKCON literature be published? The answer is that the paper mills should manufacture paper only for the publication of ISKCON literature, because ISKCON literature is published for the service of Lord Vishnu. This literature clarifies our relationship with Lord Vishnu, and therefore the publication of ISKCON literature is the performance of yajna. Jagnartat karmanon yatra loko yam karma bandhanaha. Yajna must be performed, as indicated by the superior authorities. The cutting of trees simply to manufacture paper for the publication of unwanted literature is the greatest sinful act. दूसरी बात यही है कि वृक्षों को भी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वृक्ष को उसके जीवन काल में किसी औद्योगिक कार्य के लिए नहीं काटा जाना चाहिए। कलयुग में वृक्षों को उद्योग के लिए, विशेष रूप से कागज मिलों के लिए अंधाधुंध व्यर्थ ही काटा जाता है, और यही मिले बृहद मात्रा में कागज तैयार करती है, जिससे आसुरी विज्ञापन, व्यर्थ का साहित्य, अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है तथा अन्य कागजी उत्पाद बनते हैं। यह आसुरी सभ्यता का चिन्ह है। जब तक भगवान विष्णु की सेवा के लिए आवश्यकता न पड़े, वृक्ष न काटे जाए। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म किया जाए, अन्यथा कर्म मनुष्यों को इस भौतिक जगत से बांधने वाला है। लेकिन यदि कागज की मिलें कागज का उत्पादन बंद कर दे, तो यहाँ यही पूछा जा सकता है कि हमारा ISKCON साहित्य किस तरह छपेगा। इसका उत्तर यह है कि कागज मिलों को चाहिए कि ISKCON साहित्य के प्रकाशनार्थ ही कागज का उत्पादन करे, क्योंकि यह साहित्य भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए प्रकाशित किया जाता है। यह साहित्य भगवान विष्णु के साथ हमारे संबंध को स्पष्ट करता है। अतः ISKCON साहित्य का प्रकाशन यज्ञ संपादन करता है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। यज्ञ तो श्रेष्ठ अधिकारियों द्वारा बताए गए विधि से संपन्न किया जाए। अवांछित साहित्य के प्रकाशन हेतु कागज निर्माण के लिए ही वृक्षों को काटना सबसे बड़ा पाप कर्म है। हरे कृष्ण। Hare Krishna. One of these is not working, huh? It's on and off on its own? Okay, sorry for that. No problem. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Jnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Vidutanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadmayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Sri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam
Sadvaitam Sadvajutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhupya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Go Premanande Haribo. In this 7th canto of the Srimad Bhagavatam, we find that no one is immune to the miseries of the material existence. श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में हम देख रहे हैं कि कोई भी प्राणी भौतिक दुखों से बच नहीं सकते. In fact, even the heavenly planets, where people generally feel that they should live a life free of material inconveniences. स्वर्गलोक में भी जो निवासी है स्वर्गवासी वो सोचते हैं कि हम विघ्न के बिना जीवन जिएगा. We find that they were very much inconvenienced by the appearance of Hiranyakashipu. वहाँ भी हिरण्यकशिपु का प्राकृत्य से पीड़ित हो चुके थे. In this section of the Bhagavatam, Srila Prabhupada points out that even though one may be living in an area predominated by the mode of goodness, प्रभुपाद महाराज भागवत के इस विभाग में बताया था कि अगर कोई सात्विक वातावरण में रह रहे हैं तभी भी at any time there can be an upsurge in the modes, lower modes, passion and ignorance, to disturb the environment. तभी भी ये निम्न गुणों के उत्पत्ति के द्वारा उत्पाद हो सकते हैं. So here Hiranyakashipu is actually seeking revenge because his brother was killed by Vishnu. हिरण्यकशिपु विष्णु भगवान पर क्रोधित था और प्रतिशोध करना था क्योंकि विष्णु भगवान उनके बड़ा भाई हिरण्याक्ष का वध किया. Of course, Hiranyaksha deserved to be killed, and he was righteously killed by Lord Vishnu. हिरण्याक्ष वध करना योग्य था और विष्णु भगवान इसलिए उनका वध किया. But Hiranyakashipu and his family members took great exception to the killing of Hiranyaka. तो हिरण्याक्ष का वध से हिरण्यकशिपु और उनके कुटुंबियों क्रोधित और दुखी हो गए थे. In fact, they claimed that now this is proof that Lord Vishnu is not equal to everyone. He's actually biased. वो लोग सोचते थे और बोलते थे कि विष्णु भगवान पक्षपातहीन नहीं है, पक्षपाती है. And now we can see the mentality of a person who is demoniac. They know how to destroy things, especially those things which are emblems of Brahminical culture. असुरों का यही प्रतीक है कि ब्राह्मण संस्कृतियों के सारे पदार्थों का विनाश करने लगे हुए हैं.
They don't like the natural order that is demanded by the Supreme Personality of Godhead to have 4 varnas and ashramas. असुरों वर्णाश्रम का पद्धति अच्छा नहीं लगते हैं. They don't like the protection of cows. असुरों गोरक्षक को अच्छा नहीं लगते हैं. And they also don't like the natural environment, including beautiful trees. और असुर नैसर्गिक जिनमें बहुत सारे वृक्ष हैं वो भी अच्छा नहीं लगते हैं. What to speak of Hiranyakashipu and his minions? Nowadays, demoniac leaders all over the world are cutting down trees, killing cows. तो हिरण्यकाशिपु को और उन्हीं के अनुयायियों का क्या कहना? वर्तमान काल में असुरों करोड़ों के वृक्षों का विनाश कर रहे हैं. And our International Society for Krishna Consciousness is in part meant to reestablish this order, the order given by following Lord Vishnu and Lord Krishna. अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना समाज का एक हेतु है कि ये प्राचीन पद्धति का पुनर्स्थापना करना जो भगवान विष्णु ने बनाया. This especially includes training people to be in the mode of goodness. लोगों को शिक्षित करना है कि कैसे सात्विक रहना. And teaching people the religious principles. और लोगों को धर्म का सिद्धांतों का शिक्षण देना. And establishing varnashrama. और वर्णाश्रम धर्म का स्थापना करना. A way in which people can be engaged in service to Vishnu according to their natural propensities. जिस प्रकार से लोग अपने स्वकीय गुणों के द्वारा भगवान विष्णु के सेवा में लग सकेगा. In the second half of this purport, इस तात्पर्य के दूसरे भाग में Srila Prabhupada mentions that nothing should be used outside of the service of the Lord. प्रभुपाद जी महाराज ने लिखा है कि भगवान के सेवा के बाहर कोई भी प्रवृत्ति में नहीं लगना है. This is a principle that any person can and should take to heart. ये सिद्धांत सभी लोग अपने हृदय में स्वीकार करना चाहिए. The Sri Upanishad says, Ishavasam idam sarvam yat kincha jagatyam jagat tena tyaktena bunjita magridha kasisudhanam. Means that everything is controlled and owned by the Lord. ईशोपनिषद के मंत्र जो प्रभु जी ने गाया उसका अर्थ है कि सब कुछ भगवान के है. Tena tyaktena means those things which are set aside by the Lord as our quota. तो भगवान ने सबको अपना जीवन के लिए कुछ अलग रखा है. सब प्राणियों को जीने के लिए कुछ दिया. One can use those things that are set aside. और उस पदार्थों का भोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं. But unless they're used for in some connection to serving Krishna, लेकिन अगर उन पदार्थों भगवान का सेवा के संबंधित न हो तो they become a great burden. तो फिर खाली भार बन जाते हैं. And also, one has to take the reaction for using them. और उन पदार्थों का प्रयोग का फल भोगना है. We're all born in this world. As we're born in this world, we're given many facilities naturally. जब हमारे जन्म होते हैं इस दुनिया में अनेक प्रकार के सुविधाएं प्राप्त होते हैं स्वाभाविक रूप से. And therefore, we're considered to be debtors. इसलिए हम सब माना गया है कि ऋणी है. Therefore, in Srimad Bhagavatam, it is recommended that one surrender to the Supreme Controller and use everything in his service.
इसलिए भागवत में भगवान का शरणागत बनने के लिए उपदेश है और उन्हीं के सेवा में सब पदार्थों का प्रयोग करना। Devarshi bhutapna nrinam pitranam na kinkaronayam nranicharajan sarvahatmaraya sharanam sharanyam gato mukundam pariyahrita kartam. If one uses everything in the service of the Lord, then this person is no longer a debtor. जो व्यक्ति सभी पदार्थों को भगवान के सेवा में प्रयोग करते हैं तो वो ऋणी नहीं रहते हैं। And here in the purport, Prabhupada gives a very clear example about paper. इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी महाराज कागज का दृष्टांत दिया गया। Paper comes from fiber that we get from trees and other kinds of plants. कागज वृक्ष और दूसरे वनस्पतियों का मूल वस्तु से बन जाते हैं। And previously, many books were not there were not as many books as we have today available in the world. भूतकाल में आज जैसे पुस्तक उपलब्धि नहीं थे। In fact, sometimes it could be said that in some places all the books that were available to people were situated in one place. पहले हम कह सकते हम कहा गया है कि पहले सारे पुस्तक कोई जगह में उपलब्ध होते थे, सभी जगह में उपलब्ध नहीं होते थे। In the not too distant past, people used to write books by hand. और भूतकाल में निकट भूतकाल में लोग हाथ से पुस्तक लिखते थे। For instance, 500 years ago, the Goswami literatures were written on palm leaves using a stylus, a metal instrument that you would press down on the leaf with, then put the leaf in the sun, and the letters would then appear on the page. 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के गोस्वामी अनुयायी पत्र पर अपने ग्रंथों को लेखन करते थे, लोखंड का दंड के द्वारा। But then in Europe, there was the invention of a printing press called the Gutenberg press. It was invented by a man named Gutenberg in order to print Bibles. यूरोप में गुटेनबर्ग करके एक व्यक्ति थे जो उन्होंने पुस्तक प्रकाशन का यंत्र का निर्माण किया ईसाई बाइबल छपने के लिए। Later on, the technology became more advanced, and especially the Royal Bible Society in Europe made great advances technologically so they could print more Bibles and distribute them around the world. उसके पश्चात छपने का जो यंत्र विधि का बहुत प्रगति हो गया और उसका लक्ष्य था ईसाई धर्म का प्रचार। And then people began printing many different kinds of books. उसके पश्चात बहुत सारे पुस्तक ईसाई धर्म छोड़कर छपने लगा। And magazines. और सामायिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। What we say with our tongue actually is important. It's consequential. जो हम बोलते हैं हमारे जीभ से बहुत महिमापूर्ण है और उसका फल हम देख सकते हैं। Our speech is creative. It has an effect on our lives and the lives of other people. हमारे भाषण लोगों के जीवन पर प्रभाव होते हैं। Therefore, in the Gita, Krishna advises that we're careful with our speech. इसलिए भगवद गीता में भगवान ने उपदेश दिया कि हमारे वाक शक्ति पर क्या बोलते हैं ध्यान देकर प्रयोग करना, सावधानी के साथ प्रयोग करना। What to speak of being careful about what we write. तो फिर लेखना में भी सावधानी के साथ रहना है। But because people are not oriented towards the
a goal, a spiritual goal in life, they write anything and they say anything. लोगों का आध्यात्मिक सिद्धांत न हो, इसी कारण से कुछ भी बोलेंगे और कुछ भी लिखेंगे. And this causes problems for the world. और ये दुनिया के लिए संकट का उत्पादन, संकट का उत्पत्ति का कारण होते हैं. As Shukadeva Goswami mentions in second canto of Srimad Bhagavatam, there are many topics for discussion in human society. शुकदेव गोस्वामी भागवत में कहा है कि चर्चा का विषय मानव समाज में बहुत है. But he basically says, what is the use of all these topics if they don't relate to the Supreme Personality of Godhead? उन्होंने यही आगे कहा कि अगर भगवान के साथ संबंधित नहीं है तो ये सब विषय व्यर्थ है. So the speech, the way we speak and the way we write will affect the world. It'll have a long-lasting and far-reaching effect on the world. इसलिए हम सब समझना चाहिए कि हमारे जो प्रवचन और लेखन दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा. So we should be careful about what we say. इसलिए हम जो कहते हैं उसमें सावधानी के साथ कहना चाहिए. And what we write. और जो हम लिखते हैं. And what kind of books we read and what kinds of books that we make available to people. और पुस्तक के विषय में भी ऐसे सावधानी रखना है. If the books that we read and distribute are about Krishna, this is a highly spiritual activity. अगर पुस्तकों का पाठ और वितरण भगवान कृष्ण के संबंध में होते हैं तो ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति है. In fact, it's a tradition in our line of teachers coming all the way from Krishna to give some literary contribution to the world. हमारे गुरु परंपरा का पद्धति यही है कि दुनिया को कुछ लेखन प्रदान करना है. But you find that those teachers who write something about Krishna are very careful to write according to the Shruti, Smriti, Pancharatrika Vidhi, etc. हमारे गुरुजन बड़ी सावधानी के साथ शास्त्र का उपदेश के अनुसार अनेक प्रकार के साहित्य का रचना किया. Otherwise, it is a disturbance to society. नहीं तो केवल उत्पादों का कारण बन जाते हैं समाज के लिए. What to speak of writing any old thing that comes to your mind? और अगर हमारे मन में जो आ जाते हैं तो उसका क्या कहना. What kind of disturbance does that create to the world? वो दुनिया के लिए एक बड़ी उत्पाद का कारण बन जाते हैं. So these are a few basic points. तो ये सब. But I'll take. Yes, sorry. ये कुछ आरंभ में कुछ विचार है मेरा. But we'll take some time for questions or reflections. तो अभी हमको कुछ समय लेना है पूछताछ के लिए और आप विचार अगर प्रकट करना हो तो आप कर सकते हैं सब. किसी का प्रश्न अगर हो. हाँ प्रभु. We want to excel like you in distribution. So what can we do? He's asking, how can we excel in book distribution? प्रभुजी पूछते हैं कि पुस्तक वितरण में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं. The first most important aspect of book distribution is to read the books that we have. प्रभुजी कह रहे हैं कि पुस्तक वितरण के सबसे महिमापूर्ण प्रवृत्ति है कि पुस्तकों का अध्ययन करना पहले. Devotees distribute books because they love them. भक्त लोग
हमारे ग्रंथों का वितरण इसलिए करते हैं क्योंकि उन ग्रंथों के लिए प्रेम रखते हैं. If you read Bhagavad Gita every day and you feel Krishna's speaking to you in your life and you're feeling benefit, then you'll feel naturally inclined to distribute it to other people. अगर आप रोज गीता का पाठ करेंगे तो स्वाभाविक रूप से और उस उपदेश पर ध्यान करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप प्रेरित हो जाएगा गीता का प्रचार करने के लिए. And if you're reading Srimad Bhagavatam systematically and you hear a sound vibration that you realize is divine, then you'll feel inspired to give it to the world. और अगर आप श्रीमद् भागवत ठीक ढंग से पाठ करेंगे और उसका दिव्य वाणी का पर ध्यान करेंगे तो अवश्य ही उस वाणी का प्रचार करने के लिए प्रेरित हो जाए. I recommend that each devotee chant at least one chapter of Bhagavad Gita every day. मैं सोचता हूँ और मेरा सुझाव है कि एक भक्त रोज गीता का एक अध्याय का पाठ करना. And also that you're on a schedule so you know when you'll finish the Bhagavatam. और श्रीमद् भागवत का पाठ में भी सुव्यवस्थित पद्धति पाठ्यक्रम के द्वारा जिस प्रकार से पूरा भागवत का पाठ होगा. And the other books as well. और सभी पुस्तकों को भी पढ़ना है, अध्ययन करना है. The other way to excel in book distribution is to get books. और पुस्तक वितरण करने के लिए पुस्तकों का संकलन करना. Because we have found that it's not possible to distribute books that you don't have. और अगर पुस्तक न हो तो कैसे पुस्तक वितरण करना असंभव होते हैं. And by some miracle we have available to us the topmost of the Vedic pictures in big quantities. We can get them. आश्चर्य की बात है, चमत्कार की बात है कि हमारे पास ये सब दिव्य ग्रंथ बड़ी मात्रा में उपलब्धि होते हैं. If you keep these literatures with you wherever you go, और अगर आप जहाँ जाते हैं साथ में ये सब पुस्तक रखेंगे, you'll meet people that you can distribute them to. तो आप लोग मिल सकते हैं जिनको आप बांट सकते हैं. And you'll have a different experience in your day when you're able to distribute books as you move from one place to the next in your life. तो आपका जीवन का अनुभव बदल जाएगा अगर जहाँ भी आप जाते हो वहाँ पुस्तक वितरण करेंगे. The third way to excel in distributing books is to make sure that you make them visible. और तीसरा क्या बोलते हैं क्रम है इस पद्धति में वो है कि पुस्तक लोगों को देखना चाहिए, दृष्टिगोचर होना चाहिए. If you keep all the books in the go down and keep the go down locked, then no one can see them. अगर सारे पुस्तक गोदाम में बंद रहेगा तो कोई देख नहीं सकेगा. You won't sell any books. और पुस्तक कभी बिक्री नहीं होगा. But if you brought them in the temple room and piled them up in boxes, you put them right here. अगर यहाँ मंदिर में रखेंगे पुस्तक तो बांटेंगे पुस्तक. Everyone come and say, what are all these boxes? लोग आके देखेंगे और पूछेंगे ये सब पेटी में क्या है. I say these are all Bhagavad Gitas and Srimad Bhagavatam. आप बोल सकते कि ये सब गीता और भागवत में. Actually, Prabhu, this Vamsidas is here. Stand up. So he and his wife run a book table in the temple here every day. Nice. Talia bajao. So whatever you just said, he's responsible for making that, at least in this temple. Yes. He does that. I can't talk about the other temples. Sadhu, sadhu. I was saying also, if you bring in all the books from the go down and you put them all in the temple room,
प्रभु जी कह रहे हैं गोदाम खाली करो और सब पुस्तक मंदिर में रखे हैं। And you tell people there's no room to have darshan unless you sell all these books. प्रभु जी कहते हैं कि तुम्हारा दर्शन नहीं होगा ये जब तक ये पुस्तक बिकेगा नहीं। And if you're a grihastha at home, you can take cases of books and put them in front of the refrigerator. और अगर आप गृहस्थी हो तो अपना घर में ले आओ पुस्तक और आपके फ्रिज के सामने रखो सारे पुस्तक। And you tell everyone in the family, we don't eat until the books are gone. और परिवार के लोगों को बोलो कि जब तक ये सारे पुस्तक का वितरण ना होगा भोजन इस घर में नहीं होगा। The fourth way that you can excel in book distribution is to organize. और चौथा पद है चरण पद। ये पद्धति में व्यवस्था करो। Organization takes giving one's attention to the subject matter. व्यवस्था का तात्पर्य यही है कि विषय पर ध्यान देना। If devotees come together and discuss, brainstorm ideas, and then systematically enact those ideas, then there will be big progress. अगर भक्त लोग साथ में आकर बैठेंगे और विचार विमर्श का आदान प्रदान करेंगे तो बड़ा प्रगति होगा पुस्तक वितरण करने में। I know you're already doing these things, but since you asked me, I'm just giving you a systematic way to. मैं जानता हूँ कि आप सब ये कर रहे हैं, लेकिन आपने पूछा है इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। Another question. Yes. May I request you to brief on monthly Sankirtan festival? Okay. She's asking for a brief on the monthly Sankirtan festival. माता जी पूछ रही है कि मासिक संकीर्तन महोत्सव के बारे में कृपा करके बताइए। We means at our temple in Silicon Valley, the monthly Sankirtan festival about 8 years ago. हमारे मंदिर में 8 साल पहले मासिक संकीर्तन महोत्सव का पद्धति आरंभ किया था। And we did it because we have a community of mostly grihastas. इसलिए हमने यही पद्धति चालू किया क्योंकि हमारे समाज ज़्यादा से ज़्यादा गृहस्थी भक्त है। They're very busy. और वो सब व्यस्त है। So we decided that once a month we would have a day when the whole community would come together and then go out together to distribute books. इसलिए हम निर्णय किया कि हर महीना एक दिन में सब लोग इकट्ठा होके बाहर जाकर पुस्तक वितरण करेंगे साथ में। And we would not put any pressure on anyone. और हम किसी पर दबाव नहीं करना निर्णय किया। We'd think of ways to make it fun so a lot of people would want to come. हमने विचार किया कि ये प्रवृत्ति आनंदपूर्ण कैसे होगा जिस प्रकार से सब लोग भाग लेगा। And we do some training to show devotees how to communicate, how to interact with people so that they'd feel confident. और सारे भक्तों को शिक्षण का शैक्षणिक शिविर चलाते थे, सिखाते थे कैसे करना है जिस प्रकार से पुस्तक वितरण होगा। And then we'd all go out for a few hours to distribute at various places. फिर अलग-अलग जगह में कई घंटों तक हम सब साथ में जाकर पुस्तक वितरण करते थे। And then we'd come back and meet and talk about what our realizations were. फिर पुस्तक वितरण इस प्रकार से पुस्तक वितरण करने के पश्चात हम साथ में बैठ के विचार विमर्श आपस में करते थे। And we'd offer nice prasadam. और अच्छी प्रसाद सबको खिलाते थे। So we started with just a few devotees doing this. और जब हम इसका आरंभ किया तो थोड़ा भक्त लोग मंडल छोटा भक्त मंडल थे। And as our community grew, so did the monthly Sankirtan festival. तो जब हमारे समाज का विस्तार हुआ भक्त समाज, तभी ये मासिक संकीर्तन महोत्सव का विस्तार भी हो चुके थे। And now we
we have about 200 devotees that go out. वर्तमान में 200 भक्त लोग साथ में बाहर निकलते हैं, पुस्तक साथ में हर महीना पुस्तक वितरण करते हैं इस प्रकार से। And that includes kids, children go out. बच्चे भी जाते हैं इसमें। All the women go out. महिला मंडल भी जाते हैं इसमें। Husbands and wives go out. दंपतियों भी साथ में इसमें भाग लेते हैं। Someone even brought their dog. कोई अपने कुत्ता भी लाया है इसमें। The dog distributed many books. कुत्ता भी पुस्तक किसी के बजा के। Dog's name was Yogi. कुत्ते का नाम योगी थे, उन्होंने भी पुस्तक वितरण किया। And the devotee made a backpack for the dog that could hold books. कोई एक भक्त ने कुत्ते की पीठ में पुस्तक रखने का कुछ व्यवस्था किया। And the dog Yogi died, and then I think he took birth back in our community. वो कुत्ता मरकर हमारे समाज में जन्म लिया, मैं सोचता हूँ किसी भक्तों के घर में मनुष्य के रूप में। There's all over ISKCON, all over the world, most devotees live in the Grahastha ashram. संपूर्ण भूमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा भक्त ISKCON में गृहस्थ भक्त हैं। Here in India, some communities have 5,000, 10,000 community members. भारत में ISKCON संस्था का कोई मंदिरों में 5-5 हजार भक्त लोगों के मंदिर हैं। So we can see a time in the next couple of years when some communities of 5,000, 10,000 will organize to go out at the same time every month. हम सोच रहे हैं कि आगे ये बड़ी मंदिर जहाँ 5,000 गृहस्थ भक्त लोगों के मंदिर है, हर महीना ऐसे व्यवस्था होगा जिस प्रकार के सब लोग साथ में निकलेगा पुस्तक वितरण करने में। But the main emphasis is that going out to distribute books is for our own purification, to purify ourselves. मेरा विचार है कि हमारे मुख्य प्रवृत्ति और मुख्य लक्ष्य यही है कि अगर हम पुस्तक वितरण करेंगे तो हमारा खुद का शुद्धता और पवित्रता होगा। Because book distribution, going out to give people knowledge, is high sadhana. क्योंकि हम अगर बाहर जाएंगे और पुस्तक वितरण करेंगे तो ये ऊंचा साधना है। And every time you go out, you have to depend on Krishna. और जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम कृष्ण भगवान पर निर्भर रहेगा। And sometimes people even say no, they reject, they say, I'm not interested. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम ये पुस्तक में रुचि नहीं है। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that you get chid rakta for your chid sharira, means spiritual blood for your spiritual body, when you go to teach Krishna consciousness and somebody rejects you. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि कोई अगर आपसे पुस्तक नहीं लेते हैं तो यही आपका आध्यात्मिक शरीर का रक्त पोषण की तरह होते हैं, आपको ताकत वाला बनाएंगे। So we find that, oh sorry, that's all right, no problem. No, it's beautiful, it's very nice. Yeah. So we find that the communities around the world, and there are many of them that are doing monthly Sankirtan festival, they're thriving. हम देख रहे हैं कि जहाँ ये मासिक संकीर्तन महोत्सव चलते हैं, उन भक्त मंडल बड़ी धूमधाम से चलते हैं, अच्छी तरह चलते हैं। Book distribution is not just for December. पुस्तक वितरण केवल दिसंबर मास के लिए नहीं है। It can go on nicely January, February, March, April, May, June, July, August, September. ये पुस्तक वितरण प्रवृत्ति हर महीने में करना संभव है। Hare Krishna. It's a great pleasure to be in this beautiful temple with all of you. आप सभी के साथ मैं आपकी उपस्थिति में मेरा बड़ा आनंद आ रहा है।
I'm exhilarated to see my dear godbrother Bashu Ghosh Prabhu here. बासु घोष दास का दर्शन करने से मैं भी आनंदित हूँ. He's a devotee who's dedicated to preaching Krishna consciousness. वो एक भक्त है जो कृष्ण भक्ति का प्रचार करने में जीवन समर्पित है. And who's known as a great stalwart, a follower of Srila Prabhupada. उनके ख्याति है कि प्रभुपाद जी महाराज का चुष्ट अनुयायी है. Now that many of us disciples of Prabhupada are getting older, अभी हम प्रभुपाद महाराज के साक्षात शिष्य का उम्र बढ़ते जा रहे हैं. we find that the main solace or happiness in our life is seeing our God brothers and our God sisters. हम देख रहे हैं कि जब भी हमारे गुरु भाई और गुरु बहनों को देखते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा आनंद का बड़ी आनंद प्रदान करने वाला वस्तु है. We all worked together during the 60s and the 70s, and we have this bond together. No matter where we live, we all have this connection. और हम सब संबंधित हैं चाहे कहाँ भी हम हो, क्योंकि हम 40-45 साल से साथ में ये आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं. So it's very heartfelt to come here to see you. तो मैं मेरे हृदय में आपको देखने में अच्छा लग रहे हैं. And all of you are proof of the potency of the parampara. और आप सब इस हमारे गुरु परंपरा का शक्ति का प्रमाण है. Because you have taken so seriously to the process of bhakti. क्योंकि आप सब गंभीरता के साथ भक्ति का पद्धति स्वीकार किए. And now you're giving it to all the people of Baroda. और अभी आप बड़ौदा के सारे लोगों को भक्ति का प्रचार कर रहे हैं. Which is an activity that can only be done by those who are receiving spiritual power through the parampara. और केवल जो आध्यात्मिक शक्ति गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त करते हैं वही ये काम कर सकते हैं. So I've been greatly enlivened to come here today to see all of you. तो आप लोगों का दर्शन करने से मेरा बड़ा उत्साह हो रहा है. Please go on spreading Krishna consciousness and taking it yourself as much as possible. कृपा करके कृष्ण भावना का प्रचार करते रहिए और उसका आस्वादन करते रहिए. The world is actually literally under attack now from people like Hiranyakashipu-like people who are running wild all over the world. दुनिया के सारे नायक लोग हिरण्यकशिपु जैसे हैं और उनके कोई बंधन नहीं है, इसलिए दुनिया पीड़ित हो रहे हैं. The only solution to these problems or to counteract these forces are spiritual solutions. और ये सब असुर शक्तियों का विरोध करना ये आध्यात्मिक शक्ति ही एकमात्र उपाय है. And I would argue that we have the best of spiritual solutions given to us through our literature and through our Guru Varga. मेरा वाद है कि ये उपाय सबसे अच्छी उपाय है जो हमारे गुरुजन और ये आध्यात्मिक साहित्य ने दिया हमको. Gaur Premanande Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo. Vanchakalpadurusha Kripasandabhevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Anantakoti Vaishnavindiki Jai. Yeah, 1 minute Prabhu.